मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। मैं काम करता हूँ सिलाई के काम। और आप कब से मैं इटली में आया 2013 पे। मेरा नाम मोहम्मद हसीब है और मैं इधर सिलाई का काम करता हूँ। मेरा नाम गुलाम कमर है और मैंने पाकिस्तान में यही सिलाई का काम तकरीबन 6 साल 7 साल किया। उसके बाद यही काम मैंने तुर्की में 3 से 3.5 साल किया। तुर्की में और उसके बाद मैंने 1 साल ग्रीचा में काम किया, ग्रीस। उसके बाद फिर इधर इटालिया में आया। हाँ, मैं अपने देश से सिलाई का काम उधर से सीखा था। तकरीबन मुझे 8 साल हो गए सिलाई के काम में। हाँ, मैं तो तकरीबन जब मैं 10-12 साल का था जब से मैंने स्टार्ट किए। पढ़ाई भी करता था, वही नहीं ये भी काम भी सीखा था, उस पर करने लग गया। पाकिस्तान में मैंने वो छोटी नगोशियो पे एक दुकान पे काम किया है, ये जो कपड़े बनाते हैं पाकिस्तानी। उसके बाद मैंने तुर्की में फैक्ट्री में काम किया और उधर का तो इधर वो चैनी है ना, इनका सिस्टम एक है। उधर वो कानून के हिसाब से 12 घंटे ड्यूटी और 2 दिन छुट्टी, और इधर वो चैनी तो 12-14 घंटे काम करते हैं। जैसे कि ये अल्बा में सामने तो नज़र आता है कि लीगल तरीके से काम हो रहा है, लेकिन अंदर वो सब फेक है। कंपनियां भी फेक बनाई हुई हैं और काम भी 2 नंबर है। कॉन्ट्रैक्ट है सफाई वाला और काम है सिलाई वाला। कॉन्ट्रैक्ट है सफाई वाला और काम है इस्त्री वाला। कॉन्ट्रैक्ट है सिलाई वाला और काम है कटिंग वाला। ऐसे ही तो कॉन्ट्रैक्ट भी ठीक सफाई वाला किया हुआ है। जो त्रेजमा होता है, कोतरिजमा जो इटालियन ज़बान में कहते हैं, वो हमें नहीं मिलता। ये छुट्टी के पैसे भी नहीं मिलते। और 20 मिनट वो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है हर रोज़, एक दिन नहीं, हर रोज़। क्यों? तुम बानियों में जाते हो और काफ़े पीते हो। महीने का ज़्यादा से ज़्यादा इधर 1200 1000 से ऊपर इतना होता है। Allora, questa lotta inizia in realtà nel gennaio del 2025. Questo gruppo di lavoratori che lavorava in questa stireria per brand di media alta fascia, quindi brand come Patrizia Pepe, Graven, Canadian, loro stiravano e confezionavano cappotti soprattutto. Loro vengono al sindacato e ci raccontano che gli viene imposto di lavorare sotto il contratto delle pulizie. Ci raccontano che tutti i sabati sono costretti a lavorare di fatto gratuitamente, che se tutte le volte che vanno in bagno durante il turno di lavoro poi devono rimanere 20 minuti in più gratis a lavorare per recuperare il fatto che hanno fatto una pausa per andare in bagno. Insomma, tutta una serie di cose molto pesanti. Per cui a gennaio inizia lo sciopero all'alba, che abbastanza velocemente arriva ad un accordo sindacale che internalizza tutti i lavoratori, che quindi diciamo fa sparire queste fake company create solo per tenerli nella precarietà, ma li contrattualizza tutti con l'alba, tutti con contratti indeterminati, full time, e l'applicazione del contratto nazionale. Quindi finalmente iniziano a lavorare diciamo come si dovrebbe lavorare. हम तो पहले बहुत ज़्यादा काम करते थे। 7 दिन काम था, कभी 6 दिन, कभी 7 दिन, 9 घंटे 10 घंटे। तो जब से हम खुद को बास मेंटर हुए ना, तकरीबन 6-7 महीनों से, तो उसके बाद हमें अपने हक मिलना शुरू हो गया che 8 घंटे काम और 5 दिन काम। Durante l'estate però i lavoratori iniziano a vedere che una parte delle commesse non arriva, alcune macchine spariscono dall'azienda, fino ad arrivare al ritorno dalle ferie a fine agosto, in cui trovano un foglio attaccato sulla porta dell'azienda dove c'è scritto che a causa di un temporale estivo tutte le macchine sono state danneggiate e quindi i lavoratori devono stare a casa fino a nuovo ordine in attesa che l'azienda ripari le macchine. फिर उसने जब 3 महीने 4 गुजर गए तो उसने फिर नया फेक कंपनी बनाना शुरू कर दिया, जो ये VLAJ पे है। वो फैक्ट्री बंद किया और नया 2 फैक्ट्री ओपन किया। वो उसने ना पुलिस से आदमी लेके आया, उधर उनको बताया कि मैं आपको 8 एरो घंटा दूंगा, और इधर आके 8 घंटे कॉन्ट्रैक्ट और 8 एरो घंटा, और इधर आया तो वही 12 घंटे वो काम कर रहे हैं और 7 दिन कर रहे हैं। वो सब अपने कंट्रोल में है कि किसी से बातचीत ना करें। Ovviamente questa cosa ci puzza molto, e quindi iniziamo a cercare di capire che cosa sta succedendo e scopriamo che i titolari dell'azienda hanno aperto due nuovi capannoni,
Uno è quello davanti a cui siamo ora, un altro è qua a pochi chilometri di distanza, sempre a Montemurlo, con due ragioni sociali false, e le hanno intestate a dei responsabili dell'Alba, e hanno portato persone, reclutandole da altre città, per costringere di nuovo a lavorare 12 ore, a vivere in case di fatto gestite dal caporale, per lavorare le stesse commesse che si lavoravano all'Alba. तो ये हमारा सैलरी भी नहीं दिया और कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा, लेकिन ये तकरीबन ये लाल बाग का मामला नहीं है, ये बहुत और भी मामला है। मालिक एक जगह से फैक्ट्री बंद करता है, नई जगह पे नए नाम से खोलता है, और वो बोलता है मेरे पास मुझे लॉस हो गया, इस तरह का ड्रामा करके नया फैक्ट्री बनाया, उधर फिर वो लोगों का हक मारना शुरू कर दिया। जैसे हमारे साथ और लोगों के साथ 12 घंटे काम करते हैं, 7 दिन करते हैं, ऐसा वो एक फैक्ट्री बंद किया और नई फैक्ट्री खोला, उसमें भी वही पुराना लोगों के साथ जानवरों वाला सलूक, ऐसे सिस्टम है। लेकिन ये हम आवाज़ उठा रहे हैं कि ये सिस्टम बंद होना चाहिए। ये नहीं है सिर्फ लाल बाग का, सब फैक्ट्रियों का ये सिस्टम इनको बंद करना चाहिए। A inizio settembre inizia lo sciopero, che ad oggi appunto va avanti da più di un mese e mezzo. Inizia lo sciopero per chiedere che il lavoro venga riportato dentro l'Alba, che queste due aziende finte che hanno aperto solo per riabbassare il costo del lavoro vengano chiuse, e in questo ovviamente il ruolo e la responsabilità dei committenti è molto grande, e quindi loro devono in qualche modo garantire che questo tipo di operazioni, di delocalizzazioni in loco non siano possibili, ma che quelle commesse vengano lavorate da operai che hanno i diritti. Da agosto l'azienda non sta più pagando gli stipendi. Durante lo sciopero siamo anche venuti a scoprire che l'azienda, dal momento della firma dell'accordo sindacale di gennaio, aveva smesso di pagare l'affitto del capannone, per cui durante lo sciopero l'azienda è stata sfrattata, e quindi in questo momento siamo in una situazione di grande confusione. Quello che noi stiamo provando a fare, e la direzione verso cui stiamo lavorando, è un piano che abbiamo scritto e portato a un tavolo istituzionale che siamo riusciti a far aprire alla provincia di Prato, a cui siedono alcuni dei committenti, per trovare un nuovo soggetto, una nuova azienda, un nuovo imprenditore che sia disponibile a assumere alle stesse condizioni contrattuali tutti i lavoratori dell'Alba, prendendo le commesse di questi committenti, e quindi diciamo avendo un'occasione anche di fare entrare nuove commesse, di espandere la propria attività produttiva, ma legando appunto queste commesse alla tutela dei posti di lavoro dei lavoratori dell'Alba. यही है, हमारे सूद कुबास का बहुत हमारी हेल्प कर रही है, और बाकी भी जो दोस्त हैं वो भी हमारा हेल्प कर रहे हैं। मुश्किलात तो होती है जब सैलरी नहीं मिलता, घर का किराया देना पड़ता है, खाने का देना पड़ता है, इधर भी खाना पड़ता है। मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन सूद कुबास का और हमारे दोस्त लोगों का है कि वो हमें हेल्प करते हैं। La lotta degli operai, l'Alba, è stata la prima lotta che è riuscita a far sedere i committenti a un tavolo di trattativa sulla filiera, e per noi già questo è un enorme risultato. Ovviamente dobbiamo arrivare alla fine, e la fine significa la tutela dei posti di lavoro con i diritti degli operai, l'Alba, però il fatto che la forza di questi lavoratori, di questi operai, è riuscita a far sedere i committenti a un tavolo e dirgli: ehi, vi dovete preoccupare, è una vostra responsabilità come si lavora lungo le vostre filiere, e siete voi che ora dovete fare qualcosa per tutelare i nostri posti di lavoro, è già una cosa enorme, una cosa storica dal nostro punto di vista. मैंने जब इटली में आया तो मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मैंने चाइनीज़ के पास काम किया डॉक्यूमेंट, इटालियन के साथ इतना काम नहीं किया। इटालियन के साथ ज़्यादा जब सूद कुबास में इंटर हुआ तो इनके बाद चला, तो हमने सोचा कि ज़िंदगी तो इन लोगों की है, इंसानियत तो इनके अंदर है, बिना लालच के, बिना कुछ किसी किस्म का एक सेंट का भी लालच नहीं है, और हमारी हेल्प कर रहे हैं। ये नहीं है कि एक सिर्फ दिन रात 24 घंटे हमारे साथ हैं। तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, और हम
इस नौबत तक आए हैं कि हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकें।